Hello and welcome back to my channel. So today's video is gonna be about the CV. So मैं तुम लोग को मेरी CV दिखाऊंगी, like not my CV, means like the sample of my CV. जब मैं अपना CV लिख रही थी तो मैंने इस template को follow किया है. So I'm sharing you all this template. मैं टेम्पलेट ये डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकती अभी तक क्योंकि आई हैव नॉट गॉट द फीचर येट. आई वाज ट्राइंग टू पुट द ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन बट क्योंकि मेरे अभी फॉलोअर्स उतने नहीं है, आई डोंट हैव द फीचर टू put this in my description, but I will show y'all. Y'all can just follow. You can type it on Word if you want. You can type it on Canva. टेम्पलेट अगर तुम्हें कोई अच्छा टेम्पलेट मिला तो, या तो तुम Notion पे टाइप कर सकते हो. So yeah, I cannot screen record it, but I'll try to tell you what it has. So first of all, you can just open a new Word page. Make sure, मैंने ये गलती की थी कि मैंने एक बार पूरा वर्ड फाइल पे अपना CV लिखा एंड देन आई डिड नॉट सेव इट इन एनी ऑफ द डेस्कटॉप पे कहीं सेव नहीं किया था एंड इट वाज लॉस्ट एंड आई वाज लाइक ओ गॉड. After typing it all, I lost all the things that I had written. So make sure you all save it somewhere in documents. नाम लिख के properly save कर दो क्योंकि तुम्हारा एक CV नहीं होने वाला. तुम उसको कितनी बार finalize करोगे क्योंकि कितने सारे प्रोफेसर्स को भेजना है. So make sure you make a folder and put this new CV in that. So first of all, start with your full name and state and India. फोन नंबर तुम लिख सकते हो +91 जो भी कंट्री का कोड है एंड ईमेल आईडी तुम लोग को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ईमेल आईडी टू सेंड एवरीबॉडी, तो वो ईमेल आईडी यहाँ लिख देना. एंड पर्सनल प्रोफाइल. व्हाट इज पर्सनल प्रोफाइल? तुम्हें समरी, छोटी सी समरी लिखना, तुम्हें बताना है कि CV किस लिए भेजा है. सो तो आई हैव मेंशन दैट डेडिकेटेड, हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, थोड़ा सा महंगे शब्द यूज करके. A dedicated curious undergraduate student in major, तुम्हारा जो मेजर है. अंडरग्रेजुएट, अगर तुम अंडरग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट इफ यू आर गोइंग फॉर द स्टडीज. एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू परस्यू, लाइक तुम्हें इसमें सिर्फ यही बताना है कि शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारा पूरा इंटेंशन बताना है तुमको, द इंटेंशन ऑफ व्हाई यू आर ईमेलिंग देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विथ योर मेजर and then tell them that what you're trying to pursue, like aiming to pursue higher studies in field and specialization, like maybe it is like a research subject or it is like a major. It depends upon everybody. So mine was applied mathematics, I guess. I don't remember my CV. And now you have to sell yourself in just one sentence. That is, passionate about exploring areas, like I've written here, specific areas of interest. The shortlisted professor's research interest. तो जो प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट है, जो तुम्हें पसंद आया, वो तुम्हें यहाँ लिखना है. Known for being, and now you have to brag about yourself. So known for being, describe your 1 or 2 academic traits. Like तुम यहाँ क्या describe कर सकते हो, like maybe you're in the top 10 of your class or you have been awarded something, kind of things. like, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना तुम क्यों इस मेजर में परस्यू करना चाहते हो अपने मास्टर. इन जस्ट गिव योर जो भी तुम्हारा बेस्ट ट्रेड है, तुम्हारी एकेडमिक बेस्ट ट्रेड, या यू कैन जस्ट से यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन समथिंग और यू डिड वेरी वेल और यू आर वेरी वेल एट दिस सब्जेक्ट और समथिंग लाइक दैट. तो तुम्हारे बेस्ट 2-3 जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ लिख सकते हैं. एंड फॉर next, for mentioning a skill or experience like research, leadership, academic excellence, I had written about one lab experience that I had got from somewhere. So if you have not got it yet, you all can get it. अगर तुम्हें नहीं मिला है, अगर यूजली तुम्हें मिल गया होगा क्योंकि तुम अगर स्टेम से हो तो तुम्हें लैब एक्सपीरियंस मिल गया. You can just write the best experience you had or best skill that you have learned in the lab there. तो छोटी सी समरी है. फर्स्ट हैव टू टेल योरसेल्फ कि तुम्हारा मेजर क्या है और तुम आगे उस मेजर के बाद आगे क्यों पढ़ना चाहते हो, और तुम्हें बताना है कि उस मेजर से तुम इस मेजर में क्यों आगे बढ़ना चाहते हो एंड ऑल. एंड देन ब्रैग अबाउट योरसेल्फ अ लिटिल बिट. This is a short and very sweet. I like this part because without reading the whole CV, you know if the person is like इसकी CV रीड करनी चाहिए कि नहीं, पता चल जाता है इतने पार्ट से. Am I starting recording और मैं ऐसे ही बोल जा रहा. लास्ट टाइम मैंने पूरा रिकॉर्ड किया और मैं बटन दबाना ही भूल गया and I was so pissed I did not record again. So next is education. So you can write your university, college name and
state and country, and write the date of my admission कब हुआ था, like 2021 to 2024, whatever timing है पूरा लिखना. If it is still you're studying, you can just write till present. And the thing is, क्योंकि हमारे colleges affiliated होते हैं university, so you can write your university name, like तुम्हारी country, तुम्हारा जो state है, let's say Kerala. I've been to Kerala. So Kerala, so तुम्हारी जो भी college है, it is, I don't know if there is a Kerala University. I don't know. But if there is a Kerala University and it has a lot of colleges which it is affiliated to, which these colleges are affiliated to Kerala University. So you have to write Kerala University and then your college name, XYZ college and state, country, and write the degree name as Bachelor of Science, Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce, Bachelor of Administration, anything, and in the major. GPA. A lot of y'all were questioning me about how much GPA is needed and all sort of questions like cutoff क्या होता है. But the thing is, हर university का depend करता है. But usually, I have seen is the cutoff for 4.0. कोरिया में 4.0 CGPA देखते हैं. So the cutoff is more than 2.8. Okay, अगर 2.8 के ऊपर तुम्हारी CGPA, you should be fine. Even if your CGPA is less than 2.5 also is fine, because my friend had CGPA less than that, but she made it up with her curriculum. She had a lot of curriculum, like उसका final year project जो था वो थोड़ा सा excellent work था. It was like she had presented it and a lot of things you all can just, अगर तुम्हारे मार्क्स कम है तो भी तुम कोई और चीज डाल के अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो. सो फॉर जीपीए 4.0 स्केल पे हमारा जीपीए 10 में होता है, तो यहाँ जीपीए 4.0 स्केल पे होता है. नॉट 4.5, नॉट 5, इट्स 4.0. एंड डोंट वरी अबाउट जीपीए सो मच, क्योंकि मास्टर्स होता है तो दे जस्ट केयर फॉर इट फॉर द कट ऑफ. इवन मेरे को भी बहुत डर था कि मेरा जीपीए कम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मैंने जब बाहर बच्चे देखे थे उनके लाइक सीजीपीए 4.4 होते हैं. आई वाज लाइक व्हाट इन द वर्ल्ड, इतना ज्यादा हाई सीजीपीए कहाँ से मिलता है. अगर मेरे मार्क्स कम है तो भी मैंने उसको, व्हाट डू यू से इन इंग्लिश, I forgot how to say it. तो तुम्हारे मार्क्स कम हो तो भी तुम उसको, you can make it up by some other things. So I'll show you what you all can do to make it up to the marks. तो तुमने एक बार GPA लिख दिया. Thesis. Now I don't remember why I used this word thesis. You all can write final year project. Everybody from undergraduate, even for the masters, you all do a thesis. अगर तुम masters complete कर चुके तो तुम दोनों लिख सकते हो, final year project और तुम्हारा जो thesis है वो भी लिख सकते हो. But if you have completed undergraduate, you can just write your final year project. Write it very concise, and if it's a research paper, write the full name, or अगर available है तो you can just put the link as well. And a lot of people on the internet was saying like तुम्हें कोर्स वर्क नहीं लिखना चाहिए सीवी पे, बट दिस इज एन एकेडमिक सीवी. ओके, यू नीड टू शो देम व्हाट यू हैव लर्नड एंड व्हाट यू आर ओपन टू लर्न. सो आई हैड टू पुट कोर्स वर्क बिकॉज that's how my professor knew what I had studied and what I had didn't study. And in the interview he did ask me everything out of my CV. For writing coursework is, you have to write down. मैंने एक पेज पे उसका उनके पूरे जो भी रिसर्च इंटरेस्ट था वो लिखा था. एंड एवरी कोर्सेज लाइक हम एटलीस्ट हम अराउंड 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएट्स में, अंडर ग्रेजुएट में. एंड देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड हैं जो मास्टर्स में और एक्सटेंड हो जाते हैं, लाइक उसका अगला स्टेज वाली पढ़ाई होती है. सो मेक श्योर टू राइट. आई हैड रिटन अराउंड 15 coursework that were related to what I wanted to study, because they were related to the research interest. So अगर subjects, मेरे subjects थे थोड़ा applied mathematics, तो मैंने जो भी, my research interest is applied mathematics थे, जो भी subjects related to applied mathematics or which could even give a base to applied mathematics, all the subjects जो मैंने पढ़े हैं undergraduate में मैंने वो mention किया था कि these are the coursework that I've done. Coursework is like the papers जो तुमने answer किए हैं. So mention the subjects related to the research interest. See, I've written. I knew stuff before.
नेक्स्ट इज रिसर्च इंटरेस्ट. सो आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन, सो तुम्हें यहाँ प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन करना है. सो यू कैन जस्ट से जो भी उनका इंटरेस्ट है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. उसकी रिसर्च इंटरेस्ट, अगर तुम्हें ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्ड भी पता चला तो तुम यहाँ डाल सकते हो. एंड पब्लिकेशन. Publication, if you do not have, it's completely fine. Because it was an optional thing. Okay, optional thing. If you have anything optional, you can just mention here. It is not a bad thing. Anything related to this, just mention it. Don't think twice. And if there is a publication, you can just write properly. If it's available, put the link as well. Next is experience. This part is the most important part. Okay, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, एक्सपीरियंस पार्ट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपीरियंस पार्ट में तुम अपने पूरे लैब एक्सपीरियंस लिखोगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, अगर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं याद हो रहा है तो मैं बता दूं, तुम ये एक्सपीरियंस लिख सकते हो, क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि जो तुमने प्रोजेक्ट में काम किया है, व्हाट वाज योर रोल इन दैट. सो दैट इज व्हाट यू विल राइट इन द पोजीशन. इंस्टीट्यूट, तुम्हारा इंस्टीट्यूट है तो या यू वर वर्किंग विद सम अदर इंस्टीट्यूट एज वेल, जस्ट राइट दैट एंड डेट, एंड राइट एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर द प्रोजेक्ट, लाइक प्रोग्रामिंग और what else. Like you can just write the project name, तुमने कैसे काम किया, present किया, what skills you have used, what skills you learned, teamwork and all, leadership, whatever, जो भी तुम्हें, कितने, मेरे around 5 bullet points थे हर experience के नीचे. So I had 2. One was for my final year project and one was for my optional project that I had done from outside. So if you do not have an optional project from outside, तो होना चाहिए, क्योंकि तुम लैब काम में करते हो तो तुम्हें लैब के एक्सपीरियंस में जो भी स्किल्स मिलते हैं वो सब तुम्हें यहाँ मेंशन करना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस वन ऑलमोस्ट टुक अ लॉट ऑफ, लाइक अराउंड 16 बुलेट्स आई हैड, दोनों पोजीशंस को इंक्लूड करके. सो दिस वन वुड बी द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, and if you're for masters you will have that one also. और one thing I wanted to tell you all, अगर तुमने एजुकेशन में है ना, तुम लोग अपने डेट के हिसाब से लिखो. So it should go from bachelor's, master's and PhD. So even in experience the date should go for the least, the past, the present year. जो लेटेस्ट है वो ऊपर आना चाहिए और जो नीचे नीचे वो सारे पुराने जो है वो डालना. So they know what you're doing recently. That is the order I had put, and I would recommend you all to put it. So they know your part from, like, they start with your latest to the oldest part. So they know your progress as well. तुम्हारे जो प्रोजेक्ट में जो भी काम आया है वो स्किल्स वेस्ट नहीं जानी चाहिए, सब कुछ यहाँ मेंशन कर देना. Okay, so next is the relevant skills. Most probably for STEM, mine was programming. I don't like programming though. Programming or else lab experience, or else for other subjects जो तुम्हारे जो भी होते हैं skills, like क्या होता है, surveys and all kind of things. I don't know, मेरे को इतना खास नहीं पता है. जब मैंने सीवी बनाया, मेरा सीवी कम्प्लीटली 0 खाली था, मेरे को नहीं पता था कुछ लिखने के लिए. तो फ्रॉम सेकेंड डे itself I started to get involved in a lot of things, so I could fill up my CV. Literally I used to do something today and I used to come back home and sit and fill my CV. So for 2 years, around, was it 2 years? Yeah, from January to January, correct. I was literally coming home every day and trying to think of what should I write in my CV. तो कल सुबह मेरे को जाके कुछ और सीखना है, कुछ और मेरे को इन्वॉल्व होना है ऐसे. So if you have time, try to keep CV as one of your diary. Like हर दिन आके इसको fill करना है जैसे. Even if you don't have, you can, I used to, even if I didn't have anything, I didn't do anything, I was like packed with classes, I would just come home and stare at my CV and I used to think like, what would be the best to put it here. So like ऐसा क्या है जो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ ताकि वो मेरी सीवी को और ज्यादा अच्छा. मैं दोनों लैंग्वेज बोल चुकी, इंग्लिश भी नहीं आती मेरे को, हिंदी भी नहीं आती, बहुत मुश्किल पड़ रहा है मेरे को. cause we don't speak. यहाँ आने के बाद बात करना ही बंद कर दिया है मैंने. So after relevant skills, you can write training or workshop. Workshops तो बहुत होते हैं, seminars. जब हम अंडर ग्रेजुएट में होते थे, मैं तो इतने सारे अटेंड किए, मेरे को मन ही नहीं करता था जाने का, बट अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता.
तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया तुम्हें कि अपना फर्स्ट दिन ऑफ कॉलेज याद करके सब कुछ लिखने की कोशिश करो। लाइक थोड़ा सा तुम्हें याद है, अरे मैंने तो लिटरली ऐसे किया है कि आई टू नॉट रिमेम्बर व्हाट वर्कशॉप आई हैड अटेंडेड, सो आई टू गो टू माय प्रोफेसर्स एंड आस्क देम लाइक व्हाट वाज द वर्कशॉप दैट वाज हेल्ड इन माय फर्स्ट ईयर, दैट दिस सब कुछ मैंने उनसे पता किया है उसके बाद, सो आई कुड राइट प्रॉपरली लाइक हु हैड ऑर्गेनाइज्ड इट, वेयर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, द डेट एंड ऑल. So title of workshop or webinar, the person who had institute जिसने ये किया था, workshop organize किया था, and what in very briefly I had written what I had learned there. So maybe data analysis or anything, any workshop that was going on, you can just mention about it. Why is the light so dark? So एंड कॉन्फ्रेंस, इंडिया में इतना कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं कोरिया में जब से आई हूँ, दिस इज माई थर्ड कॉन्फ्रेंस दैट आई एम गोइंग. मंडे जाना है, आज है वेडनेसडे. सो अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंस आई अटेंड हियर, बट इंडिया में मेरे को मौका नहीं मिला था. बट आई डिड अटेंड अ वेबिनार. ट्राई टू अटेंड इफ यू कैन गेट. And then just write all the webinars, seminars you have attended with the date and little bit अगर तुम्हें कुछ याद है, उन्होंने कुछ specifically पढ़ाया था and it would be useful, just mention that in the bullet points. Next is teaching experience, because I'm from academic background and just always get an internship done. You can just take it for 15 days, 30 days, जब भी तुम्हें लगे कि तुम free हो. And achievements. So in my achievement, I had done 2-3 presentations and like some competitions, some quizzes that I had won. Just mention all of that here. Related to maths, okay? Don't go out of maths. But you can go out of maths if you want to. Something that could be related. एंड या ये सारी जो तुम लिख रहे हो ना, ये सारी चीजें लेटेस्ट लिखो, लाइक लास्ट 5 years में. उससे पहले के लिखने की जरूरत है, 10वीं क्लास के 12वीं क्लास का भी लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट एवरीथिंग यू हैव डन इन अंडर ग्रेजुएट. अगर तुम्हारे पास कुछ है, जैसे कि 12th 10th में तुमने ऐसा कुछ नेशनल लेवल पे कुछ किया है, तो वो लिख सकते हो तुम. नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं. मेरे को ये पता था, मेरे को ये बात याद आई कि लाइक हमारे बचपन में बोलते थे लोग, बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, ऑल द सर्टिफिकेट विल काम आएगा. मेरे 12वीं क्लास तक जो भी सर्टिफिकेट्स है, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है, कभी भी यूज नहीं किया. आई डोंट नो. And if the certificates were not useful, the skills that I've learned through those competitions were useful. It's not a bad thing, right? After achievements, you can write reference. Reference is important because एकेडमिक सीवी में तो इम्पोर्टेंट है. सो यू कैन जस्ट गिव. मैंने अपने एचओडी का रेफरेंस दिया था, एंड वन ऑफ माय प्रोफेसर who guided me for a long time for research work and all, like a research advisor. So I had given his reference. The 2 professors I had, अगर most probably somebody you are close to, क्योंकि वो लोग, I have not, मेरे प्रोफेसर को तो ईमेल नहीं आया है, but later you have to ask a reference from your HOD. So make sure you write your HOD's reference itself, क्योंकि उन्हीं का जरूरत पड़ता है. So yeah, so make sure to get a little connection with the professors. तुम्हें प्रोफेसर्स के साथ कनेक्शन तुम्हें पता नहीं चलता, but they are the most useful people in the institute. Everything that I have in my CV is because I was able to communicate with my professors. अगर मैं ऐसे like चुपचाप एक कॉर्नर में बैठा रहता, I would like do by myself, I don't think so. Half of my CV would be empty. So this is what the CV looks like. अगर अभी ये टेम्पलेट है, लेकिन इसको भरने का काम तुम्हारा है. So it took me around 1.5 years to fill it up, because I was in my just third semester. Third semester. That time I started writing my CV. So I had a lot of time, but still I felt like I had very less time and I used to try to do a lot of stuff. But सच बताऊं तो जब मैंने CV लिखना स्टार्ट किया, I thought my life got a little interesting, because just for the purpose of writing my CV, I used to get myself involved in new things. And मेरे को like, अरे मैंने ये क्यों करने की कोशिश की. But then when it used to teach me something which I had never learned, like I almost saw the edge of my knowledge. Like मेरे को लगा नहीं था कि इसके beyond भी कुछ होता है. So make sure in college अगर तुम हो तो try to communicate with some smart, not just academically smart, a person
I would say just communicate with the professors. More than friends, I would say professors help कर देते हैं. So yeah, this is a CV. Try to fill it up. You still have time. It's not like अभी May का time चल रहा है. A lot of people are trying to apply. You can apply. If it's a good chance, you can get through. If you do not get any email back or don't get admission, you can always have time to fill it up. So yeah, that's all about the CV. Yeah, so that's it about the CV. I'll meet you in the next video. Bye.